Yes, beta. Now we start our new chapter, functions. Functions and domain of a function. Domain of a function. It is your topic, today's topic, functions and domain of a function. What is function? You have to study set theory. After set theory, you study Cartesian product. Then you study relations and then function. Function as a definition बोला जाए, if you say what is function, you can write down function is a special type of relation. फंक्शन रिलेशन से ही आया हुआ है बेटा. फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. एज ए डेफिनेशन you can say that if A and B are two non-empty set such that every element of A has a unique image in B is known as फंक्शन. क्या वो एक फंक्शन है. और इन अदर वर्ड्स there is a one correspondence between A and B is known as a function. In this way, it is the definition of the function. You can write down it in this y is equal to fx. Y is your dependent variable, x is your independent variable. Understand beta? Okay. Y is your dependent variable, x is your independent variable. When you this is A elements or B elements beta, and you apply a rule here, F mapping. A elements are your domain elements, B elements codomain elements, and the domain elements, suppose A to B, range elements. Range elements, and range is the subset of codomain elements.
elements. The elements of set A has image in B, they known as range elements. A range is always a subset of codomain elements. Okay, understand beta? Now next, domain of function. Domain of a function. Domain. Definition means first में आप लोग can write down definitions as a definition value of x for which function is defined. Understand beta? Second, expansion of graph on x-axis. Third point is three basic points of domain. First, if y is equal to fx, under root y is equal to 1 upon में fx, and third point is y is equal to 1 upon में fx. In this case domain lie on these point. If fx, domain is possible when fx greater than and equal to 0. In this case fx greater than 0, in this case fx is not equal to 0. These are the three major points you can find out if a function under root, if a function 1 upon के root fx, if a function y is equal to 1 upon के fx. In this case, to find the domain of the function fx should be greater than and equal to 0. Here greater than 0, here function is not equal to 0. In other case, in this case, if y is equal to fx, in this case domain of a function real numbers. और इसमें बेटा आपका ग्रेटर देन रियल नंबर्स हैं बट ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. इसमें बेटा fx ग्रेटर देन 0 रियल नंबर्स होंगे डोमेन्स. इसके अंदर भी बेटा क्या होंगे, डोमेन्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बट दे आर रियल नंबर्स. एज ए एग्जाम्पल फोर्थ पॉइंट्स बेटा अंडरस्टैंड बेटा. नेक्स्ट नोट देम. And now write down them. Next,
फोर्थ पॉइंट बेटा, your when questions has two or more functions or more functions, then hx is equal to fx plus में बेटा gx. In this case domain is equal to बेटा d1 intersection d2. Domain of this functions and complete domain is equal to their intersection. As an example beta, you can take any example expressions के through you can understand it. If your y is equal to 1 upon में root 1 minus x square प्लस में बेटा x क्यूब माइनस में बेटा 6x स्क्वायर प्लस में बेटा 11x प्लस 8 अपॉन में बेटा x स्क्वायर माइनस के 4. Find out domain of the function. Now see here, this function is equal to y is equal to 1 upon में fx root प्लस में बेटा this is equal to fx into में 1 upon में बेटा fx. Understand बेटा? In this case fx should be greater than 0. In this case this is simple polynomial function. Numerator this is simple polynomial function and demon of this beta real number. This is this or this is equal to beta 1 upon में fx or fx is not equal to beta 0. Understand beta? 3 functions है beta. Here 1 upon में root f of x. This is simple polynomial function or this is denominator 1 upon में beta fx. Understand beta? And then write down it in this way, y is equal to 1 upon में root 1 minus में बेटा x स्क्वायर प्लस में बेटा x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर प्लस में बेटा 11x प्लस में 8 इंटू में बेटा 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 4. अंडरस्टैंड बेटा? यस बेटा. In this case you solve 1 minus x square greater than 0 and then x square minus 1 less than 0, x minus 1 into beta x plus 1, this is equal to beta less than 0 and this is equal to minus 1 less than x less than beta 1. इसका डोमेन इसके बीच में लाई. ये सिंपली बेटा आप लोगों का इट बिलोंग्स टू ए पोलिनोमियल फंक्शन. पोलिनोमियल फंक्शन डोमेन हेयर दिस इज योर d1, दिस इज योर d2. डोमेन इज बेटा अ रियल नंबर. नेक्स्ट बेटा हेयर this is equal to x square minus के 4 is not equal to 0 बेटा. x minus 2 into बेटा x plus के 2 is not equal to बेटा 0 and then x is equal to बेटा plus minus के 2. डोमेन d3 is equal to बेटा रियल माइनस में बेटा -2 and बेटा +2 या 2 - 2. अंडरस्टैंड बेटा? d1 पहले फंक्शन का डोमेन क्या है? -1 to x बेटा. सेकंड में बेटा रियल नंबर एंड थर्ड में बेटा दिस. तो
अब आप लोगों ने इनका डोमेन निकालना है बेटा. सो डोमेन ऑफ दिस टॉपिक इज डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू D1 इंटरसेक्शन बेटा D2 इंटरसेक्शन बेटा D3. यस बेटा. अब आप लोग फर्स्ट इट इज योर रियल लाइन. इट इज बेटा रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू बेटा प्लस इन्फिनिटी. प्लस इन्फिनिटी यानी इसका डोमेन क्या है, रियल्स का मतलब क्या है बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू बेटा प्लस इन्फिनिटी. फर्स्ट. सेकंड बेटा आप लोगों का दिस इज योर जीरो, दिस इज योर -1, दिस इज योर -2, दिस इज योर बेटा +1, दिस इज योर 2. तो व्हाट इज कॉमन, एंड द कॉमन एलिमेंट्स आर दिस. these elements बेटा कॉमन एलिमेंट इज इक्वल टू, कॉमन एलिमेंट्स क्या है बेटा आप लोगों का, दिस एलिमेंट बेटा. में यहाँ पे डोमेन्स क्या, -1 2 बेटा 1. अंडरस्टैंड बेटा. रियल है बट दिस इज नॉट रियल. तो डोमेन ऑफ फंक्शन बेटा हेयर x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बेटा, -1 to बेटा 1. Am I right or not बेटा. Domain of this question बेटा -1 to 1. क्लियर है बेटा. इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. बाकी आप लोग क्या हो जाएगा बेटा, एक्सक्लूड हो जाएगा बिकॉज इट इज कॉमन बेटा. ये क्या है बेटा आपका कॉमन एलिमेंट्स है इन दोनों के बीच में, देन इट इज कॉमन. इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या है, दिस इज योर इंटरसेक्शन बिटवीन दिस फंक्शन. So domain of this is equal to this. Understand beta? With the help of questions you can understand beta. Okay, next beta. So you can solve all the questions in this way. Okay beta, we will start our next